भाई क्या करता है यूट्यूब पे लागू के? I like that. हैं? Nothing. तो बस आप लाइव हैं, इतना क्या है। चलो कोई सॉन्ग बजा दे, सब लोग मजमा हो। इस्लामी कुछ लगाना चाहता है वो लगा दे। कितने लोग देखते हैं? मुझे कौन देखेगा? अब लाग हो रहा है तो एक दो बंदा भी तो आता ही होगा ना। ऐसा कुछ नहीं। तो व्यू बढ़ाने हैं ना, तो क्या कर पता है? हैं? नहीं। हम बता, एक मुस्लिम शाहिद लिख दे, तो अब अंधभक्त बहुत सारे आ जाएंगे। क्या लिख दे? एक मुस्लिम शाहिद। तुमको लगता है यही हरकत करेंगे हम? कर रहे हैं लोग ऐसे ही। मुझे तो लोगों में गिन रहा है। हैं? जवाब दे सकता है? तुझे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? किस चीज का? जो लाइव चल रहा है, किस लिए? खोल के देख। क्या देखूं? जो लाइव चल रहा है। लॉक करेगा? हैं? वो मैं कल भेजा। अरे तुमको जो लिंक भेजो, लिंक खोला ना तुम। तो मैं कल भेजा ना। तुम लिंक जो बोले वो खोल के देखो बस, ज्यादा बकचोदी नहीं। खोल लिया? देखो तो खुल जाए। चलो टेक योर टाइम। एक बार कॉल कर लेते हैं उसको। पासवर्ड बोल। Zaur added 1 2 3. जेड ई। हाँ? Zaur added 1 2 3. जेड ई वाई ए यू आर। तो भाई। हैं? ZE हाँ। YAUR added 1 2 3 capital Z. तो जेड कैपिटल है। अब डंटा नहीं, शांति से बैठे पढ़ाई करो। हाँ? कनेक्ट हो गया? लिंक मिल गया? जावा नहीं रहता ना? रहता हाँ? था। तो भाई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ? सिद्दीकी हाँ, कनेक्ट नहीं दे रहा। सलाम अलैकुम बेटे। कैपिटल ZYE, ज़ियाउर का EYAUR छोटा है, जेड। कैपिटल सिर्फ Z है। हाँ। EYAUR@786। 786 है। वे यार 1 1 2 3 कर रहा था। वो आ गया वे क्या? है यासीन वो वाला जो। हाँ आ गया।
बेहतरीन लौंडे। कल तो तू 4 घंटा बैठा था उस पे, माशाल्लाह। बेटे तुम देख ही नहीं रहे हो, एक और जाकर चैनल चेक करो तुम। क्या? एक और जाकर चैनल देख तो सही तू। अबे देखा था मैं आज दोपहर। आपका देख ले, क्या देखूं? टोटल टाइम कैलकुलेट तो कर एक बार। देख रहा हूँ भाई, सब्र कर। दोस्त है। अबे भाई कि तू तो आग लगा दिया। दे मौज कर दी, मौज। एक ये देखेगा और ये देख। हैं? देख सही हो रही है। देखा तूने? हाँ भाई बेहतरीन, वेरी गुड। तेरे भाई ने इससे माशा सेटअप चेंज कर दिया पूरा, इधर से हटा बहुत दिया बढ़िया भाई। यही तो बस भाई, बस यही चाहिए। पूरा, एकदम सही कर दिया है। अब तू मुझे कॉल नहीं भी करेगा तो मैं तुझे दिख जाऊंगा अच्छे खासे टाइम। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। कितने वो देख लिए उसके? क्या बोल रहा है? डीएसए के कितना वीडियो लगा ली? अरे टाइम लगता है भाई, एक ही दो दिन में सब थोड़ी कुछ हो जाता है। हाँ हाँ कोई नहीं भाई, करता जी। मैं वैसे पूछ। और बता। सैमसंग का क्वेश्चन तेरे पास है क्या जो तूने दिया था? किसको? तूने सैमसंग का टेस्ट दिया था ना, क्वेश्चन है तेरे पास? अपना? हाँ। वो रुक ये जो तेरे को था और एक दूसरा वाला है। रुक जा, ये एक जो क्या मिनट, एक मिनट तक व्यू को ऐड कर रहा हूँ कॉल पे, ठीक है? फिर एग्जिट कर देगा वो। क्या करे, क्या करेगा? एग्जिट कर देगा वो, फिर रास्ते में है ना। मतलब एग्जिट क्यों करेगा? पहले इस कॉल को मैं वॉइस कॉल में कन्वर्ट करता हूँ, रुक जा। पहले वॉइस कॉल, तभी कैमरा ऑफ कर। ये वॉइस कॉल में कन्वर्ट कैसे होगा? अबे करना। रुक, तुझे काट के करता हूँ कॉल सिंपली। कर कर। हाँ भाई, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे हैं अभी? लगेगा 1.5 घंटा लगेगा। बढ़िया। भाभी जी को बोल दिए 2 प्लेट कर देने के लिए, हालांकि फिर भी बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ सही। क्यों? यासीन भाई भी है ना। अच्छा। आइए आइए, वो तो बात की बात है। किसको किसका कॉल था ये? इसका था, ओवस ओवस को जस्ट ही कॉल किया था। पहले आपको कॉल किया था, उसके बाद अच्छा उसको हो किया। गए। अच्छा अच्छा, ठीक है आते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है। लिंक मिला यासीन? अभी तो नहीं मिला। रुक, फॉरवर्ड करता हूँ। तो मुझे यहाँ देखने से अच्छा तो आराम से स्ट्रीमिंग पे देख सकता है। तो चल फिर मैं वही चला लेता हूँ, मेरी।
अरे इसको शांति से ऐसे भी इसको भी रहने दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, शांति से मतलब। ठीक है। Is it am I audible? Yes, sir. And now we have done the basics of vision trade class. Today, it is the now today is the vision trade class, right? So we go to study on taxonomy. Of course, that's what we do. We do multiple species from the world. In the manuscript, we have multiple species. Okay, that is part of the idea. Say nothing. Okay, now that case, that's right. 5% people next. I will take a mass drop. Say that 5% 77. So that's a 5% all from number one. Hey guys, so we'll be solving another problem today, that is trailing zeros, and this is from 10 days of code series on hacker blocks. Hey guys, so we'll be solving another problem today, that is trailing zeros. कमेंट गया है And this is स्क्रीन शेयर करो ना अगर मेरे फोन की चार्जिंग ना हो जाए काट ले तू। ये कमेंट किया मैंने करता हूँ, ठीक है। मैंने एक कमेंट किया है एक लाइक भी from किया 10 days of code series on hacker blocks. और कुछ करो बोल ना। क्या देख रहा है कोडिंग ब्लॉक? चल तू देख। चार्ज कर ले, फिर बाद में कॉल कर आराम से। अरे कोई नहीं, मैं लाइव देखा। बढ़िया, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज। So the question says, given a integer n, we want to आप क्या बोले यासीन भाई? कमेंट लाइक कर रहा है देखो अबे यही हरकत बचा है तुम्हारे पास अब क्या? पता चल गया मुझे कि हाँ तो कमाल कर रहा है। क्या मुझे पता चल गया कि तू लाइक कर रहा है, कमेंट में लिखा हुआ है हाय डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट। चल अब हो गया, ज़्यादा बकचोदी नहीं। माइक ऑफ है लग रहा है ना, आवाज़ नहीं आ रही है। आ रही है बढ़िया, 20 सेकंड लेट आती है तुम्हारी इतना लाइक कमेंट कर देंगे ना कि तुम्हारा वीडियो देखो वो इतना फट से सारे 10 आदमी तक पहुंचता है तुम्हारा कल इंटरव्यू है ना, बैठ के पढ़ोगे, मेरा बानी आ जाएगा, फिर माहौल ख़त्म हो जाएगा। फिर ये तकवीम भाई भी आ रहे, तो फिर बातचीत होगा, 4 लोग मिलेंगे तो फिर गप्पे होंगे। मैं मुफ्ती बन जाऊंगा फिर तो बस अभी अभी that returns the count of trailing zeros in n factorial, which means you need to compute the value of n factorial and count number of zeros at the ending of that number. But this is something a little tricky, because if n is a large number, then you cannot compute n factorial. Clearly, you can see n is a very large number. It is of the order 10 raised to the power 9, which means n factorial can be very large. Okay, so let me show you a single input output. So as you can see here,
n is given as 5, and we know output n factorial is 120, and it has a single trailing zero. So the output here is 1. And similarly, you can have lot more zeros if the number is large. So what makes this problem tricky is this large value of n. Okay, and we clearly know to store large factorials we need lot of digits, and the largest number that we can store in long int is of the order 10 raised to the power 18, which means we can store at most 18 digits in long int. And this is something we cannot do with 10 raised to the power 9 factorial. That would clearly mean uh, at least 10 raised to the power 9 digits. Okay, so this number of digits we cannot store in long int. So we cannot compute factorial. Second is the issue with the complexity. If you compute n factorial, it is going to take order of n time, and if you do something in order of n time, it will also give you TLE. So both, we have a memory issue, we have a time limit issue. So which means we have to think something different. We have to come up with a way which allows us to compute the number of trailing zeros directly without worrying about the value of n factorial. Okay, so we are going to look at a method in which we can directly know the number of zeros in n factorial without calculating the value of n factorial. This is what we are going to do in this video. So let me give you example of, let's say, 10 factorial. Okay, so we are interested in finding out what is the number of zeros if we compute 10 factorial or 100 factorial also. Okay, so clearly 10 factorial is written like this. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and yeah, so this is what 10 factorial is. Now, if you want to know what is the number of zeros in 10 factorial, okay, so you are basically looking for, maybe we can say this number is something multiplied by 10, something multiplied by 10, if this number has two zeros. Okay, so we basically want how many times 10 occurs in 10 factorial. So one time it is occurring is here. Okay, another time it is occurring is when you multiply 2 and 5. This also makes 10, so that means you will get 110 from here and you will get 110 from here. Okay, so we are interested in finding the number of times factors of 10 are coming. Factors of 10, so factors of 10 are 2 and 5. And also we know the number of occurrences of, uh, okay, so we can combine 1 2 with 1 5 to make a 10. Okay, and we can also say occurrences of 2 will be much larger than occurrences of 5. So if we know occurrences of 5 in n factorial, we can definitely find out how many zeros will be there. Okay, so number of zeros will be same as occurrences of 5 in 10 factorial. So this is what I'm trying to say. Okay, so occurrences of 5. So how do you find occurrences of 5? So then for that you have a very basic formula. Okay, maybe you have studied in school also. If you want to compute how many powers of 5 are present in 10 factorial, so you can say I will divide 10 by 5, take the floor, then I will divide 10 by 5 square, take the floor. I will keep on doing this until this is 0. Okay, so this is 0, so I will stop here. So this is nothing but 2 plus 0. So there are two occurrences of 5, and hence 10 factorial will have two zeros. Okay, or if you want to see in 100 factorial, then what will you will do? You will divide 100 divided by 5. Okay, so how many multiples of 5 are there? How many multiples of 25 are there? Okay, so 5 square, and then you do cube, and since this is 0, this is 20, this is 4, and so the final answer is 24. So in 100 factorial, you will have 24 trailing zeros. 24 trailing zeros. So this is how you can actually compute the trailing zeros. Okay, and if you're not sure why this is true, you can actually see if you want to count number of fives in 100. Okay, so let's try to
break it down like this: 1, 2, 3, 4, 5. Then let's say 10. Then let's say 15. Then let's say 20, 25, and so on. Okay. So this is 50, and so on. Okay. So if you want to count the number of fives, so 1 5 is coming from here, 1 5 is coming from here, 1 5 is coming from here, 1 5 is coming from here. So number of fives will be nothing but 100 by 20. Okay. But there are some numbers like 25. So for these numbers, you have more than 1 5. This is 5 square. This is 5 into 5 into 2. And then you have 75. This is 5 into 5 into 3. And you have 100, which is 5 into 5 into 4. So these numbers are contributing 5 two times. Okay. So if you want to extract powers of 5, so you will also add these numbers which are contributing 5 two times. So that's why we divided by 5 square. So we count how many powers of 5 are coming twice, and one of them was already included when you do 100 by 20. So this is 20 and this is 4, and this becomes 24. And if you do powers of 5 cube, they are actually 0. Okay. So for any number which is between 1 to 100, you don't have you need a number which is at least 125 to extract the power which is 5 cube. So we have this term as 0. Okay. And if we talk about powers of 2, so powers of 2 will be definitely more than powers of 5, because you can extract a 2 from here, you can extract a 2 from here, and every second number is an even number. Okay. So there are a lot of even numbers as compared to numbers which are containing 5 as a factor. Okay. So a lot of even numbers. So powers of 2 are more than powers of 5. So let's say there are 10 powers of 2 and there are 5 powers of 5. Okay. So in such a case, you will only have 5 number of trailing zeros, because you can combine 5 of the 2s with 5 of the 5s to get 5 zeros. Okay. So this is the whole idea. And if you want to compute trailing zeros now, you can directly compute it without computing the factorial. The only thing that you need to do is run a loop like this. Okay. So you go, you do n by whatever is the number you have. Let's say number is d. Then you do n by d square. Then you do n by d cube, unless this term is greater than 0. Okay. So let's write the code for this program now and try to submit it in HackerBox. Okay, so we need to input a number and find the number of trailing zeros. So let's get down into code.